हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा क्लासेस। और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 6 के इंग्लिश ग्रामर चैप्टर एक्टिव पैसिव वॉइस। इसमें हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, इनका कन्वर्जन कैसे हो सकता है। तो इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए, इसका यूज जानने के लिए मेक श्योर आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। और साथ ही अगर हमें अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी वीडियो अपडेट। चलिए शुरू करते हैं। What we will cover, we will learn about what are active voices, what is passive voice, how to convert from active to passive and passive to active. Clear है? चलिए शुरू करते हैं। What is the active voice? When the subject of a verb acts or the subject is the doer of the action, the verb is said to be in the active voice. कब है active voice? जब कोई subject यानी हमारा main person, the person that is being talked about, that is the subject, उस वर्ब को करने वाला वो कुछ करता है या वो उस पर्टिकुलर एक्शन का करने वाला चीज है, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। एग्जांपल देखो, राधा राइट्स अ लेटर। राधा राइट्स अ लेटर। राधा लिख रही है, सीधी कहानी है, सीधी लाइन है, तो राधा ने एक लेटर लिखा, राधा लेटर लिख रही है, सो इट इज एन एक्टिव वॉइस। राघव हेल्प मनोज। राघव ने हेल्प किया मनोज को। अगेन द एक्शन, द सब्जेक्ट जो करने वाला है वो हमारा स्टार्टिंग है पॉइंट, पहले सब्जेक्ट, देन देयर इज अ वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट, देन दैट इज द एक्टिव वॉइस सेंटेंस। गीता गिफ्टेड प्रीति अ न्यू ड्रेस। हु गिफ्टेड? गीता। गीता इज एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, सो वी हैव दिस इन एक्टिव वॉइस। क्लियर? अब जानते हैं पैसिव वॉइस। When the subject of a verb is acted upon or the subject is the receiver of the action, the verb is said to be in the passive voice. अगर हम जो सब्जेक्ट है वो उस एक्शन को रिसीव किया है, उसके साथ वो हुआ, उसने नहीं किया है, तब हम उसको कहते हैं कि वो पर्टिकुलर सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है। एग्जाम्पल, लेटर इज रिटन बाय राधा। लेटर is the receiver written by Radha, so it is passive voice. राधा के द्वारा लिखा गया, by। अब इसका एक सिंपल तरीका है, एक्टिव वॉइस में कभी by नहीं आता है। पैसिव वॉइस में सेंटेंस जो है उसमें लास्ट में योर वर्क, योर डूअर ऑफ द एक्शन, उसको आता है नोट करते विद द by। आफ्टर by the doer of action is written. So यहाँ राधा ने लिखा था तो we wrote it like by Radha. So it's a passive voice sentence. Clear? Manoj was helped by Raghav. मनोज की हेल्प हुई थी। किसने की थी? राघव ने हेल्प की थी, by. So again, by Raghav, it's a passive voice. Preeti was gifted a new dress by Geeta. Again, by Geeta. तो it's a passive voice. Clear है? अब देखो एक्टिव से पैसिव में आप कैसे चेंज कर सकते हो। राहुल met प्रीति। आप राहुल प्रीति से मिला, we can write it as Preeti was met by Rahul. What we added? Two things. We added a helping verb was and by, and just shifted the doer of action to the last and receiver at the first. Kristen runs a small business. Again, small business is the receiver. We will write it as small business is run by. Again, helping verb is run by we added by, then we wrote the doer of the thing, Kristen. Clear? If it's, let's say, a particular sentence in all the different types of tenses. Now we have the active and passive version of it. Neha sings a song. A song is sung by Neha. Again, here see, verb changed to the past tense. We added a helping verb is because sings. Here what? Sings. So we wrote is sung by Neha. Neha is singing a song. A song is being. Again we added is के बाद being sung. So particular क्या चीज है, आपका कोई भी tense हो active voice में, verb goes to the past tense in the passive voice and helping verb उस हिसाब से लग जाता है। If it's a present continuous, is singing, it got is being sung.
Now we have Neha sang a song. So Neha, a song was sung by Neha. Neha was singing a song was being sung by Neha. इसका was हो गया, being तो वही रहा, sung वैसे ही रहा, clear है, वो थोड़ा थोड़ा clear हो रहा है. Neha had sung a song. Neha had sung a song में क्या हो जाएगा? A song had been sung by Neha. Neha will sing a song will be sung by Neha. Neha will have sung a song will have been sung by Neha. Clear how the verbs are differentiating, how the verbs are changing, and how we are adding be and this helping verb is, was, were, will. Clear it? Nurse looked after the child. The child was looked after by the nurse. Kid looked at Uncle Gil. Uncle Gil is looked at by kid. Clear? Is he taking a tea? Is tea taken by him? Do you eat mangoes? Are mangoes eaten by you? Shut the door. Let the door be shut. अब ये imperative, इसमें sentence में हमारा वो तो है नहीं, so we use let. Starting with let, then we turn the door at the first and be shut. Next example, the door should be shut. ये भी लिख सकते हो. Help the poor. Let the poor be helped. और the poor should be helped. Clear? कैसे आप imperative sentences को change कर सकते हो? और एक बात नोट करिए कि future continuous tense के कोई passive voice नहीं होती है और all perfect continuous tense की भी कोई passive voice नहीं होती है. Clear? Now we have Seema was eating guavas. What we can write? Guavas were eaten by Seema. The family was watching a cricket match. A cricket match was being watched by family. Doctor were examining a patient. A patient was being examined by the doctor. Old ladies were selling fruits. Fruits were sold by old lady. Clear है कैसे कैसे हो सकता है? I hope you guys really got the thing of it कि आप कैसे सबको सॉल्व कर सकते हो. How the active turns to passive and passive turns to active. और साथ ही में अगर आपको ये सारी चीजें पसंद आई, समझ आई, अच्छा लगा तो मेक श्योर आप हमारे चैनल से जुड़िए और इसी तरीके की वीडियोस जानने और पाने के लिए hit the subscribe button and the bell icon to never miss any video update. Also like and share this video.